Pump health checks are normal. Cryo accumulator charging is in progress. Roger. 5 minutes to over. 5 minutes to over. I'll repeat the last sentence. SDSC to control event 471 completed. Noted. COT, please note that we are going to power on ACBTs. COT noted. TCDC recording SHAR 1 and SHAR 2. Please note we are going to power on PSBT packages. SHAR 1 and 2 copied. PSC can switch on ICBTs and PSBTs. Stand by for the time mark. Mark minus 30 minutes and counting. Autonomous to CDP. Autonomous confirms range real-time Roger. network readiness for GSLV-F10 EOS 03 mission launch. CDP Roger. Calling control event number 448 completed. ROD Roger. GS2 SSCV open. Control to note event number 445 457 TCDC SHAR 1 and 2 confirms all 4 telemetry carriers are on. Request mission director to note met given weather briefing event number 444. GS2 SSCV closed. PSC can issue GS2 valve battery off. TC recording P1. Recording P1. Roger. Go ahead P1 here. I can put on pulses and control. PSC to control event number 460 462 completed. Roger. PSC to control event number 463 464 465 completed.
Noted. Control MC to CDP and 75 completed. programs loaded. NGC to control, Hey, Roger. 478 in progress. Noted. PSC to control, event number 472, P3, go ahead. 473, 474 completed. P3 Paksaran. Noted. Control to note, event सुप्रभात, number 476 नमस्कार। आज के इस GSLV F10 EOS 3 मिशन में मैं विकास स्वर्णकार सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र शार श्रीहरिकोटा से नियंत्रण कक्ष से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज 12 अगस्त 2021 को भारतीय मानक समय के अनुसार 5:43 पर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो सज्ज है GSLV F10 के प्रमोशन के लिए। इस प्रमोशन का मिशन है EOS 3 नामक भूप्रेक्षीय उपग्रह को निर्दिष्ट कक्षा में स्थापित करना। -27 minutes. यह प्रमोशन द्वितीय प्रमोशन पैड से किया जा रहा है, जिसे हम सेकंड लॉन्च पैड के नाम से जानते हैं। इस वर्ष का यह द्वितीय प्रमोशन है। इससे पूर्व इसी वर्ष PSLV-C57 का सफल प्रक्षेपण हमने देखा। Roger. उसी कार्य कौशल को जारी रखते हुए इसरो के वैज्ञानिक अभियंता आज फिर तैयार हैं GSLV F10 EOS 3 मिशन के लिए। Good morning and hearty welcome to the viewers. I am Madhuri. You are watching live the launch event of GSLV F10 EOS 03 mission being telecast on DD National from the Mission Control Center at Satish Dhawan Space Center, SHAR, Sriharikota, Andhra Pradesh, the spaceport of India. The live telecast is also available on ISRO website, YouTube, Facebook and Twitter. Today we also have with us a senior scientist of ISRO, Ms. Subbalakshmi Krishnamurthy, former Deputy Director, ISRO Telemetry, Tracking and Command Network. Thanks for joining us, ma'am. Good morning to all viewers. Thank you, Madhuri, for the introduction. I am Subbalakshmi Krishnamurthy, former Deputy Director, ISRO Telemetry Tracking and Command Network. I am proud to be here today at Mission Control Center, Satish Dhawan Space Center, Sriharikota, for the launch of GSLV F10 EOS 03 mission. The launch will take place today, the 12th of August 2021 at 5:43 hours Indian Standard Time from the second launch pad of Sriharikota. The GSLV F10 will launch EOS 03 satellite into the intended orbit. The gross liftoff mass of the rocket is 422 tons and it stands 51.7 meters tall. To put it in proper perspective, the rocket is as tall as a 12-storied building. जी हाँ, जैसा कि अभी आपने सुना, हमारे साथ यहाँ इसरो टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क बेंगलोर के पूर्व उपनिदेशक श्रीमती सुब्बालक्ष्मी कृष्णमूर्ति यहाँ उपस्थित हैं। अभी अभी उन्होंने आपको मिशन के बारे में जानकारी दी। PSLV के स्वर्णिम इतिहास के बारे में हम सभी को ज्ञात है। उसी परिपक्वता तथा विश्वसनीयता को प्राप्त कर GSLV जियो स्टेशनरी लॉन्च व्हीकल अपने पूर्ण स्वरूप में तैयार तथा पूर्ण परीक्षित होकर अपने मिशन को पूरा करने के लिए अग्रसर है। प्रमोशन यान से जुड़ी सारी तैयारियां संतोषजनक तरीके से पूर्ण की जा चुकी हैं। उसके बाद प्रमोशन की उल्टी गिनती T-26 घंटा पहले प्रारंभ कर दी गई है। इस उल्टी गिनती के दौरान कई गतिविधियां पूरी हो चुकी हैं। इसमें है यान को पावर ऑन करना, उपग्रह को पावर ऑन करना तथा उसकी स्वास्थ्य जानकारी लेना, तरल चरणों के नोदक के भराव की स्थिति प्राप्त करना तथा भराव को सुनिश्चित करना,
सभी इलेक्ट्रॉनिक तंत्रों तथा संचार तंत्रों को स्वास्थ्य जांच करना और इस समय भी सभी वैज्ञानिक अपने कंसोल पर बैठकर आंकड़ों का सूक्ष्मता से आकलन करते हुए हम अभी उत्थापन से करीब 22 मिनट 51 सेकंड की दूरी पर सारी गतिविधियां सुचारू रूप से जारी हैं। रोजर इन सभी गतिविधियों के दौरान और उससे पहले भी श्रीहरिकोटा में कोरोना से बचाव के लिए कड़े निर्देशों का पालन किया जा रहा है। ऐसी सुविधाओं का विकास किया जा चुका है जिसमें पर्याप्त अतिरिक्तताओं के साथ सुदूर स्थल पर बैठे हुए ही महत्वपूर्ण आंकड़े प्राप्त किए जा सकते हैं तथा उनका आदान प्रदान किया जा सकता है। रोजर As we wait for the launch, computers transmitting let me initial briefly values. explain the flight sequence that would be followed for minus this mission. 22 minutes. There are four All stations to know L40 strap-ons at T minus which will ignite 21 minutes at T minus changeover to channel 4.8 seconds. No confirmation Once is needed. adequate thrust is developed, the S139 core stage will be ignited at T0. The core and the strap-ons will together burn for 150 seconds. The second stage then ignites, while the first stage is still with the rocket. This is termed in rocketry as hot separation. Payload fairing or heat shield separation will take place 3 minutes 55 seconds into the flight when the rocket would have crossed much of the dense atmosphere. After 2.5 minutes of operation, the second stage burnout and separation takes place. The third stage of GSLV, the cryogenic upper stage, ignites at 4 minutes 50 Minus seconds, 21 minutes. 56 seconds Records flight all elapsed stations, time changeover and to channel operates 2. for another 14 minutes until the orbital parameters for the spacecraft injection are achieved. The separation of the satellite EOS-03 is scheduled 18 minutes 39 seconds into intended orbit. Through orbital maneuvers of the satellite, it will be placed in the designated orbital slot. ROD, Roger. PDP to ROD. Mission We are computers 20 and minutes, real-time network are ready for launch of 25 seconds away from the intended launch time. ROD, Roger. Now taking a look at the milestones this mission is going to ready set. for the launch of GSLV This is the 79th launch vehicle mission ROD, from Roger. the Satish Dhawan Space Center, marking the 14th GSLV flight so far. The GSLV F10 EOS-03 mission is the 8th one, flying the indigenously developed cryogenic upper stage. This is the 29th time the versatile second launch pad will be hosting a launch. 11th time for GSLV. This marks the second launch of the year 2021. The stage is ready for the launch. What makes this launch vehicle unique for the present mission is that it will be the first time a 4-meter diameter ogive payload fairing to accommodate larger payloads is being incorporated. इस मिशन से जुड़ी कुछ प्रमुख विशेषताएं अब मैं आपके सामने रखूंगा। यह GSLV जियो स्टेशनरी लॉन्च व्हीकल का 14वां मिशन है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से यह प्रमोशन 19वां प्रमोशन मिशन है। रेंज ऑपरेशंस डायरेक्टर टू मिस्टर स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन के साथ रेडी फॉर GSLV F10 8वां प्रमोशन मिशन है ये। इस यान में पहली बार 4 मीटर के ओजिव आकार के ऊष्मा कवच का प्रयोग किया जा रहा है, जिससे बड़े उपग्रहों को समायोजित करने के लिए जगह प्राप्त होगी। अत्याधुनिक तथा कुशल भूप्रेक्षण उपग्रह EOS-3 को निर्दिष्ट कक्षा में अंतक्षेपित किया जा रहा है।
अभी आप कुछ ही क्षणों में देखेंगे ऑटोमेटिक लॉन्च सीक्वेंस, जो कि एक स्वचालित अनुक्रम है जिसमें कि ऑनबोर्ड कंप्यूटर के द्वारा सभी गतिविधियों को जांचा जाता है। इन गतिविधियों के संपन्न होने पर वह प्रज्वलन का कमांड दे देता है। इसके लिए सभी तंत्रों की तैयारियां जांच की जा रही है। यह पूरा होने पर ALS ऑटोमेटिक लॉन्च सीक्वेंस को सक्षम कर दिया जाएगा। On your TV screens, you're watching Secretary, Department of Space, Chairman ISRO, Dr. K. Shivan, and senior scientists and center directors from various centers of ISRO. We are 17 minutes away from the launch. This is Mission Director. Mission Readiness Review, Launch Authorization Board and Chairman has cleared to go ahead with the countdown and launch operations of GSLV-F10 UOS-03 mission. Based on the readiness of GSLV-F10 vehicle, UOS-03 spacecraft, range systems, TTC network, and considering favorable weather conditions, Mission Director hereby authorized commencement of launch operation sequence for GSLV-F10 UOS-03 mission for the launch at 5:43 hours IST today, that is 12th August 2021. Control noted. All stations to note. Mission Director has given authorization for launch. Vehicle Director hereby authorize commencement of pre-launch operations on cryo stage. TCTC data logger for all action ordinance or 2. Hereby authorize ALSC for initiating the automatic launch sequence for launch of GSLV-F10 EOS-3 mission. The countdown for the mission has commenced 26 hours before the scheduled launch time. On your TV screen, you have just watched Sri N. P. Giri, Project Director of GSLV and Mission Director for GSLV F10 EOS-03 mission, giving the clearance and authorizing the launch. You've also seen Vehicle Director announcing the start of automatic launch sequence. It is about 15 minutes away from the launch. From here on, the further activities leading to the launch will be in the autonomous mode by the automatic launch sequence. The major checkout parameters of the launch vehicle and satellite will be taken care of by the onboard computers. Request CGSS to confirm supply of GI to cryom linkages. यान निदेशक, अंतरिक्ष यान निदेशक, रेंज ऑपरेशन डायरेक्टर, TTC नेटवर्क निदेशक ने अपना तंत्रों की जानकारी मिशन डायरेक्टर को दे दी है। उसके बाद मिशन डायरेक्टर ने इसे अनुमोदित कर दिया है और यान निदेशक ने ALS ऑटोमेटिक लॉन्च सीक्वेंस सक्षम कर दिया है। -14 minutes 20 seconds. अब हम 14 मिनट 15 सेकंड की दूरी पर प्रमोशन से -14 minutes. -13 minutes 30 seconds. अभी आप देख रहे हैं GSLV F10 प्रमोशन यान अपने स्थान पर पूरी तरह तैयार मिशन को पूरा करने के लिए। सभी तंत्र
सुचारू रूप से काम कर रहे हैं। Up next is the integration video of GSLV F10 to acquaint the viewers with the rocket construction. The launch campaign begins with the ceremonial flagging off of the nozzle end segment along with the core base shroud by Director SDSC SHAR Shri A. Rajarajan. The 5 segments of S139 case bonded rocket motor being assembled one on top of the other. Right now you are watching on your screens the nozzle end segment being positioned on the mobile launch pedestal. This is the middle segment. Once the 5 segments of the first stage core motor are integrated, the assembly of igniter takes place on the head end segment. With this, the core motor assembly is complete. This is the next middle segment. The strap-ons, or the L40s as they are called, are prepared in subsystem integration facilities. They are thoroughly tested and brought to the vehicle assembly building for the integration to the main motors. You can see on your TV screens the 19-meter tall strap-on L40 motor in stages are being brought and integrated. अभी आप देख रहे हैं GS2 जो कि तरल नोदक पर आधारित चरण है, इसे पूर्ण परीक्षित कर असेंबली बिल्डिंग लाया जा रहा है। अब इसे क्रेन की मदद से प्रथम चरण के साथ समायोजित कर दिया जाएगा। यह कार्य बहुत ही दक्षता के साथ किया जाता है। अब आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं तीसरा चरण जो कि क्रायोजेनिक चरण है। इसे भी असेंबली बिल्डिंग पर लाकर रॉकेट के साथ समायोजित कर दिया गया। इसके ऊपर अंतिम में हमारा उपग्रह EOS-3 इसे सुरक्षित कर दिया गया है ऊष्मा कवच के अंदर और इसे भी असेंबली बिल्डिंग में लाकर रॉकेट के साथ समायोजित किया जाएगा। You were watching the various activities related to the integration of GSLV F10 rockets, the heat shield assembly and integration of EOS-03 satellite, and the rocket being transported from vehicle assembly bay to the launch pad by hydraulic traction. The GSLV F10 rocket is standing majestically on the launch pad. यान का पूर्ण परीक्षण हो चुका है। इसे लॉन्च पैड पर लाकर आगे की गतिविधियां यहां पर जारी की जाती हैं। इसमें है तरल नोदक का भराव तथा सभी इलेक्ट्रॉनिक तंत्रों की जांच, संचार तंत्रों की जांच की जाती है। उसके बाद लॉन्च के लिए आगे अनुमोदन दे दिया जाता है। We are 9 minutes from the launch. Minus 9 minutes. Ma'am, since you were associated with ISTRAC, could you please tell the viewers what a crucial role ISTRAC plays for the launches of ISRO? Yeah. ISRO Telemetry Tracking and Command Network ISTRAC is the premier ground segment solution provider for ISRO's satellite and launch vehicle missions since 1987 and has supported 85 plus launches. It plays a key role in providing the ground segment support through its TTC stations within and outside India, mission control center and complex network of data communication links, both satellite and terrestrial. The TTC stations are located at Bangalore, Sriharikota, Thiruvananthapuram,
Lucknow, Port Blair in Andaman, Brunei, Biak in Indonesia and Mauritius. The ground stations operate in -8 minutes. S-band, C-band and X-band and are fully automated. They can be remotely controlled from Bangalore. ISRO supports all launch vehicle missions of ISRO, both Polar Satellite Launch Vehicle and Geostationary Satellite Launch Vehicle, by providing vehicle telemetry data during pre-launch, lift-off, launch phase and beyond satellite separation event. For every launch, tracking is done from the TTC stations, providing critical real-time telemetry data from launch vehicle without break. This data is essential for assessing the performance of the launch vehicle in real time and derive important information on orbit achieved by the launcher. All the real-time plots of launch vehicle trajectory, which we are watching in the Mission Control Center, is from the data sent by the TTC stations. -7 minutes. We are 7 minutes from the launch. And you are watching this telecast live from the Mission Control Center at Satish Dhawan Space Center, SHAR, Sriharikota. प्रमोचक रॉकेट के बारे में भूतुल्यकाली उपग्रह प्रमोचक रॉकेट मार्क 2 GSLV मार्क 2 भारत का एक विकसित सबसे ऊंचा रॉकेट है जिसकी ऊंचाई 51.7 मीटर है। यह भारत का प्रमोचक रॉकेटों में चौथी पीढ़ी का रॉकेट है जिसमें SLV, ASLV, PSLV और उसके बाद GSLV आता है। GSLV की सर्वप्रथम उड़ान 18 अप्रैल 2001 को GSLV D1 नामक प्रमोचन रॉकेट के साथ देखा गया था। अब तक इसके कुल 13 उड़ानें हो चुकी हैं। इसकी भूतुल्यकाली कक्षा में नित भार ले जाने की क्षमता 2500 kg की होती है। GSLV का कुल उत्थापन भार 422 टन का है। GSLV के प्रथम चरण में PSLV के प्रथम चरण की तरह एक कोर मोटर है 139 टन का, जो कि ठोस नोदक पर आधारित मोटर है। इसके साथ 4 L40 जो तरल नोदक पर आधारित चरण है वह संलग्न रहते हैं। इस चरण के कोर मोटर का अधिकतम प्रणोद 4815 किलो न्यूटन तथा ज्वलन काल करीब 109 सेकंड का होता है। इस चरण के बाद ऊपर चलते हुए दूसरे चरण पर उच्च प्रणोद वाला विकास इंजन का प्रयोग होता है। यह चरण PSLV के विश्वसनीय PS2 इंजन की ही तरह है। इसमें ईंधन के रूप में UH-25 तथा ऑक्सीकारक के रूप में N2O4 का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें अधिकतम प्रणोद 846 किलो न्यूटन का मिलता है तथा इसका ज्वलन काल 141 सेकंड का होता है। तीसरे तथा अंतिम चरण पर क्रायोजेनिक चरण होता है। ये इसमें क्रायोजेनिक ईंधन का इस्तेमाल किया जाता है जो है लिक्विड ऑक्सीजन तथा लिक्विड हाइड्रोजन। इस चरण के अधिकतम प्रणोद करीब 75 किलो न्यूटन का होता है तथा इसका ज्वलन काल 808 सेकंड के करीब होता है। -4 minutes. We are 3 minutes 46 seconds from the launch. Let us now take a look at the launch vehicle details. The first stage, also called the GS1, comprises of hydroxyl terminated polybutadiene or HTPB based solid motor S139. Standing 20.2 meters tall, 2.8 meters in diameter, the motor has a propellant mass of 138.1 ton and lift-off mass of 160.8 ton. Along with it, there are 4 liquid strap-ons called
L40s of height 19.7 meters, diameter 2.1 meter. These operate on UH-25 and N2O4 Minus 3 minutes. hypergolic bipropellants. These 4 strap-ons have a cumulative lift-off mass of 190.9 tons and a propellant mass of 170.7 tons. The workhorse Vikas engine powers this stage. The second stage is called GS2 or the GL40HT of height 11.9 meters, diameter 2.8 meters. This stage also uses bipropellants UH-25 and N2O4 similar to the strap-ons. It has a lift-off mass of 47.3 tons and propellant mass 42.2 tons. The upper stage is called the GS3 or CUS-15 that uses cryogenic propellant combination of liquid hydrogen as fuel, while the oxidizer is liquid oxygen itself. It has a height of 9.9 meters, diameter of 2.8 meters, lift-off mass 17 tons and propellant mass 14.4 tons. The satellite sits atop ensconced in a 4-meter dia payload fairing, which is a composite structure of 8.6 meters height. ISRO has adopted ogive as a new shape for the payload fairing or the heat shield as it is called to accommodate spacecrafts of larger size. Now, we are about 1.5 minutes away from the launch. About EOS-03 satellite. EOS-03 is an Earth observation satellite. The major objectives of EOS-03 are for monitoring of natural disasters, episodic events and short-time events, to obtain spectral signatures for agriculture, forestry, water bodies, as well as for disaster warning, cyclone monitoring, cloud-burst or thunderstorm monitoring, etc. Minus 50 seconds. Now we will wait for the major minus event. 45 seconds. Minus 40 seconds. In the flight sequence, the Minus strap-ons 30 ignite 4.8 seconds before T0 or the liftoff time. I urge the viewers to watch out for this during the launch. Real-time programs activated. Minus 25 seconds. T minus 25 seconds. And we give a hold Minus to our 20 speech. seconds. And let's hear to the launch countdown from the Mission Control Center. Minus 15 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Plus 5 seconds. Liftoff normal. Majestic liftoff and a very good launch of the GSLV-F10. The Range Operations Director has announced it. सफलतापूर्ण उत्थापन GSLV F10 का अपने प्रमोशन मंच से सामान्य काम करते हुए, और रेंज ऑपरेशन डायरेक्टर ने अभी अभी घोषणा की सामान्य निष्पादन प्रथम चरण का। इसकी गर्जना हम यहां बैठकर सुन सकते हैं। यह बहुत ही रोमांचक होता है। GSLV F10 अपने निर्दिष्ट पथ की ओर। The steering program of the launch vehicle is designed to enable vertical liftoff until clearing the umbilical tower, which takes about 7 seconds. Then the roll maneuver is implemented to orient the launch vehicle axis along the intended launch azimuth. About 30 seconds into the flight, the gravity turn is initiated. The nominal thrust is 4,815 kilonewtons. The pitch, yaw and roll control is through gimbal of L40 engines. GSLV F10 is traveling eastward after liftoff from SHAR coast. The 2 TTC stations at SHAR will provide real-time telemetry data to Mission Control Center from liftoff minus 30 minutes to 500 seconds after liftoff, when geometrical loss of signal occurs.
S139 burnout, L40 is continuing. प्रथम चरण सामान्य निष्पादन करता हुआ प्रथम चरण के कोर मोटर का ज्वलन काल खत्म हो गया। अभी आप अपनी स्क्रीन पर एनिमेशन देख पा रहे हैं। फर्स्ट स्टेज परफॉर्मेंस नॉर्मल। इस क्रम में अगला L40 जो कि तरल नोदक पर आधारित L40 स्ट्रैप-ऑन्स हैं, उनका ज्वलन काल 153 सेकंड का होता है। L40 engines shut off. GS2 stage engine started. अभी अभी आपने देखा GS1 प्रथम चरण अपना सामान्य निष्पादन तथा ज्वलन काल खत्म कर रॉकेट से वियोजित हो चुका है तथा GS2 चरण का प्रज्वलन हो चुका है। Plus 3 minutes. These are the flight parameters on your TV screens right now. We are 3 minutes after the launch. Second stage performance normal. The GS2 stage with Earth storable liquid propulsion system is the second stage of the launch vehicle. It is powered with high thrust Vikas engine which flew for the first time in GSLV F08 and uses a longer propellant tank from GSLV F11. This stage is loaded with about 42 tons of hypergolic propellants stored in 2 aluminum alloy tanks of 2.8 meter diameter separated by common bulkhead and is powered with a turbopump fed high thrust Vikas engine. The engine is provided with 2 planes for pitch and yaw using electromechanical actuators. A major flight event has taken place just now, that is the separation of the payload fairing. We are 255 seconds after the launch. The altitude currently is 123 kilometers. The roll control of GS2 was achieved by hot gas roll control system. ऊष्मा कवच अभी पृथक हो चुका है हमारे रॉकेट से। इसका यह मतलब है कि हमारा रॉकेट अब घने वायुमंडल से पार जा चुका है। सेकंड स्टेज इंजन शट ऑफ। अब GS2 को बंद कर उसे पृथक कर दिया गया है रॉकेट से। तत्पश्चात GS3 क्रायो स्टेज इंजन का प्रज्वलन हो चुका है और वह सामान्य निष्पादन कर रहा है। यह अंतिम चरण है जो हमारे उपग्रह EOS-3 को निर्दिष्ट कक्षा में स्थापित करेगा। There is a confirmation about the start of the third stage of the flight, the GS3, the cryogenic upper stage, which is the third stage of GSLV. It functions on cryogenic LOX and LH2. The stage uses India's first indigenously developed cryogenic engine, CE7.5, which operates in staged combustion cycle. CUS has the unique feature of thrust and mixture ratio control systems, which can be fine-tuned based on mission requirements. Plus 6 minutes. The stage uses 2 steering engines, each having 2 plane gimballing provision for pitch, yaw and roll control. After continued success, the stage was modified with a length increase to accommodate higher propellant loading for better payload capability. This re-engineered C-15 stage with 15 tons propellant loading has been flown in GSLV F11 and is flowing in the present mission and planned in future missions as well. This is the 8th time ISRO is flying indigenous cryo stage for GSLV. The nominal thrust of GS3 is 73.97 kilonewtons and the specific impulse is
plus 7 minutes. Plus 8 minutes. क्रायोजेनिक इंजन से हमें आंकड़े प्राप्त नहीं हो रहे हैं अभी। वैज्ञानिक इसको गंभीरता से देखते हुए The launch of GSLV-F10 has taken place today, and the outcome of the mission will be announced by ISRO soon. Right now in the Mission Control Center, senior scientists are in discussion regarding the performance of the flight.
कुछ ही क्षणों में वैज्ञानिक इसके बारे में हमें जानकारी देंगे। Attention all stations, this is Range Operations Director. Performance anomaly observed in the cryogenic stage. Mission could not be accomplished fully. Could not be fully accomplished, mainly because there is a technical anomaly observed in cryogenic stage. This I wanted to tell to all my friends. Thank you.